Hello, students. How are you all doing? I hope you're all doing well. Mind blowing, awesome, superb, super great, as usually by the God grace. Students, today I'm gonna teach you a beautiful poetry in the Bazaars of Hyderabad, written by Sarojini Naidu. Every one of us likes bazaars. Bazaar is the place where we go for shopping. We can shop n number of things, everything we can shop over there. So, students, be ready with the pen and paper so that you can note down the important points of this poetry, and the summary as well as the vocabulary which she has used is very rich. Meanwhile, I will explain the meaning of the vocabulary as well for the healthy learning concept. Students, I have one important announcement for you is that in this video, I'm going to explain you in English as well as in Hindi on subscribers' demand. So students, I request you all to watch the video till the end for Hindi explanation and also for summary. Let's get into the topic, starting with the introduction of the Sarojini Naidu. So students, Sarojini Naidu, born in 13th February in 1979 and died in 1949 of 2nd March. She was a very popular poet who played an important role in the freedom struggle of India. She was called the Nightingale of India and served the country in various positions. She was the second woman to become the president of Indian National Congress in 1925 and the first Indian woman to do so. And also she became the governor of Uttar Pradesh in independent India. Her famous poems are In the Forest, Palanquin Bearers, in the Bazaars of Hyderabad, and so on. Sarojini Naidu died of a heart attack while working in her office in Lucknow. Students, first of all, we'll go through the appreciation of the poetry. Appreciation of the poetry. Sarojini Naidu wrote the poem in the context of India's freedom movement, particularly as a part of the Swadeshi movement. During the freedom movement, the Indian decided to boycott European merchandise and use the Indian products instead. Through the poem In the Bazaars of Hyderabad, Sarojini Naidu wanted to convey the message that India is rich in tradition and they don't need the foreign products. So she goes on to give a picture of bazaar where traditional Indian products are ruling. The poem is in the form of questions and answers. The poet asks the questions and the merchants answers them. Through this technique, she makes the picture of bazaar visible to us. The poem contains 5 stanzas of 6 lines each. It follows a unique rhyme scheme where the second, fourth, and the sixth lines in each stanza rhyme together. The third and the fifth lines also rhyme in the same manner. The last stanza is a slight exception though, so the general scheme is A B C B C B. After appreciation of the poetry, let's start the main poetry. The poem begins with the poet's question to the merchants about what they are selling. Like, what do you sell, O ye merchants? Students, here, meaning of ye means second person plural you, which is used throughout the poem. The rather old-fashioned ye was still popular in many Victorian poems at the time. Students, the first line of 6 is a question asked by the speaker to those in the bazaar, starting with the merchants, traders who buy from craft people, growers and artists and sell on to others. Students, the Bazaar of Hyderabad is very spectacular if you can relate with the Bazaar of Lord Bazaar, Sultan Bazaar, and as well as like the word malls also substitute the word bazaar, like a big bazaar, D-Mart nowadays, where you can find all the necessary goods together. In those days, all the goods used to display in the bazaars of Hyderabad, from the colorful turbans to the flower. What do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panel of amber, daggers with handle of jade. Students, here the word turbans means special headwears of wrapped cloth of various Asian and Arabic cultures for Sikhs and a religious item. Tunics of brocade is a woven fabric with a raised design,
Amber is a tree resin that is shaped into a gemstone and used for decorative purpose. Jade is a hard mineral, usually green in color but sometimes white or yellow. It too has been used for the centuries in, for example, jewelry and sculpture. The poem begins with the poet's question to the merchants about what they are selling. She says that the goods are displayed nicely to attract the buyers. The merchants replied that they are selling crimson. Students, here crimson means deep red color and silver colored turbans. Purple brocade tunics, that means loose long kurtas. Mirrors with amber frame and daggers, means knife with handles made of jade, a green color stone. Okay, students, I hope you understood the meaning of the first stanza. After the first stanza, let's move further to the second stanzas. In the second stanza, again questions and again answers. The poetess then visits the vendors, the maidens, and the peddlers, means sales girls and salesmen. She asked the vendors what they are weighing for. The vendors replied that they are weighing saffron, lentil, and rice. The poet then asked the maiden girls what they are grinding. They replied that they are grinding sandalwood, henna, and spices. Then the poet asked the peddlers what they are calling as their trade cry. They say that they are selling chessmen and dice made from ivory for the game of chess. Students, moving ahead to the third stanza. In the third stanza, poetess goes to the goldsmiths and asks them what they are making. They reply that they are making bracelet, anklets, and rings to adorn us, and are making bells to be tied to the feet of blue pigeons. And the bells are as thin and lightweight as the wings of a dragonfly. They are also making golden girdles. Girdles means belts or cords worn around waist for the dances, and golden sheaths for keeping the king's swords. Students, I hope you understood the third stanza. Let's move to the fourth stanza. In the fourth stanza, the poetess asks the fruit seller what fruits they are selling. They answer that they are selling the fruits such as citron, pomegranate, and plum. Next, as the poetess asks the musicians what instruments they are playing, they reply that they are playing on sitar, sarangi, and drum. After that, the poet goes to the magician and asks them what they are chanting. They reply that they are chanting the spells to bring in the aeon. Aeon means a divine power who would help them perform their magical tricks. In the last stanza of the poem, the poetess asks the flower girls what they are weaving with the azure. Azure means deep blue, and red tassels means strands of flowers. The flower girls replied that they are making garlands for the bride and the bridegroom to adorn their bed for the wedding night. They continue to say that they are making sheets of newly brought white flowers for use on the dead man's grave for fragrance. Therefore, the poetess Sarojini Naidu represents an Indian market to give us a sense of rich Indian heritage. This poem was her protest against the European products and appreciation of our own goods. With this poem, Mrs. Naidu sensitizes the people about the Swadeshi movement. स्वागत है आप सबका अरमान एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, जो कि सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया है। सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी पोएट्री बहुत ही खूबसूरत होती है। नाइटिंगेल कहते हैं चिड़िया को, तो जिस तरह नाइटिंगेल चिड़िया की आवाज़ आपको मदहोश कर देती है, बहुत अच्छी लगती है आपको सुनने में नाइटिंगेल की आवाज़, उसी सरोजिनी नायडू की पोएट्री भी आपको मदहोश कर देगी, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। सरोजिनी नायडू ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया था और ये गांधी जी की फॉलोवर बन गई थी। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद पोएम में हमें हैदराबाद के कल्चर के बारे में बताया गया है। सरोजिनी नायडू खुद हैदराबाद में पली बड़ी थी, अच्छे से हैदराबाद का कल्चर जानती थी।
उन्होंने हैदराबाद को बहुत ही खूबसूरत तरह से इस पोएट्री में बयान किया है। स्टूडेंट्स, इस पोएट्री में क्वेश्चन एंड आंसर्स के द्वारा बताया जाएगा कि क्या बेचा और ख़रीदा जा रहा है। सरोजिनी नायडू मर्चेंट से सवाल कर रही है, ओ ये मर्चेंट, तुम क्या बेच रहे हो। ये का मतलब होता है यू। स्टूडेंट्स, मर्चेंट्स को कहते हैं व्यापारी, बिजनेसमैन को। डिस्प्लेड मतलब होता है अच्छे से सजा के रखना ताकि आपको सेलेक्ट करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मिसेस नायडू पूछते हैं व्यापारी से, आप क्या बेच रहे हो। व्यापारी जवाब में कहते हैं कि टर्बन्स। स्टूडेंट्स, टर्बन्स पगड़ी को कहते हैं जो कि सर पे बांधा जाता है। क्रिम्सन मीन्स गहरा लाल कलर। व्यापारी कहता है कि हम गहरे लाल रंग की और सिल्वर रंग की पगड़ियाँ बेचते हैं। व्यापारी कहता है हम ट्यूनिक्स भी बेचते हैं। ट्यूनिक्स का मतलब होता है ढीला ढाला लॉन्ग कुर्ता। और ब्रोकेट जो है एक फैब्रिक का नाम है। पर्पल ब्रोकेट यानी पर्पल कलर का फैब्रिक। और हम लोग शीशों को बेचते हैं जिसका बॉर्डर एम्बर से बना हुआ है। स्टूडेंट्स, एम्बर का मतलब होता है मेटल, जो कि आपको ज्वेलरी में मिलेगा। तो जो ये मेटल है वो शीशे के बॉर्डर्स में लगा हुआ है। हम लोग खंजर को बेच रहे हैं। डैगर यानी कि खंजर। हम खंजर बेच रहे हैं जो कि जिसका हैंडल जेड से बने हुआ है। अब सरोजिनी नायडू दूसरे वेंडर्स के यहाँ जाती हैं। वेंडर्स माने स्टूडेंट्स ये डोर टू डोर जो फिर के बेचते हैं उन्हें वेंडर्स कहा जाता है। वे का मतलब होता है किसी चीज़ को तोलना। तो कहती हैं कि तुम क्या तोल रहे हो। तो वो बताता है कि लेंटिल्स और सैफरन को तोल रहा हूँ। लेंटिल्स कहते हैं मसूर की दाल को और राइस कहते हैं चावल को। सैफरन यानी केसर। मेडन का मतलब होता है कुंवारी लड़कियाँ। मेडन जवाब देते हैं कि हम लोग सैंडलवुड यानी चंदन पीसते हैं। हिना यानी कि मेहंदी पीसते हैं। और स्पाइस का मतलब होता है मसाला पीस रहे हैं। अब वो पेडलर से पूछ रही हैं कि पेडलर्स तुम क्या बेच रहे हो। पेडलर्स यानी ठेले पर आवाज़ लगा के बेचने वालों को पेडलर्स कहते हैं। तो उनसे पूछती है कि तुम आवाज़ लगा के क्या बेच रहे हैं। पेडलर्स जवाब देते हैं कि हम लोग चेसमेन और आइवरी डाइस बेचते हैं। और आइवरी कहते हैं हाथी के दांत को। तो हाथी के दांत से बने हुए डाइस को बेच रहे हैं। स्टूडेंट्स, सरोजिनी नायडू इस पोइट्री में बताना चाह रही हैं कि हैदराबाद का बाज़ार कितना बड़ा है और इस बाज़ार में सभी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है और कितनी वैरायटी है यहाँ पर। तो सरोजिनी नायडू अब सुनार के पास जाती हैं और पूछती हैं, तुम क्या बेच रहे हो सुनारो। सुनार जवाब देते हैं ब्रेसलेट, एंकलेट एंड रिंग। ब्रेसलेट कहते हैं कंगन को जिसको रिस्ट और कलाई के ऊपर पहने जाते हैं। एंकलेट यानी पायल और रिंग कहते हैं अंगूठी को। तो ये सब सामान सुनार बनाते हैं। और बेल्स बनाए जा रहे हैं ब्लू पिजियन के पैरों को। और जो वो बेल है कबूतरों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेल है। फ्रेल यानी वीक, बहुत ही नाजुक है। इतनी नाजुक है जितनी ड्रैगन फ्लाई का पर। और हम डांसर्स के लिए गोल्ड के गर्डल्स बना रहे हैं। गर्डल्स जो है कमर पे बांधा जाता है। और सुनार कहता है कि गर्डल्स हम डांसर्स के लिए बेच रहे हैं, बना रहे हैं। इसके अलावा सुनार सोने के स्कर्ट बनाते हैं राजाओं के लिए। इस कबर्ड में तलवार को रखा जाता है या फिर इसमें खंजर को रखा जाते हैं। मियान, हिंदी में मियान कहते हैं। इस पूरा स्टैंजा में देखा है कि सुनार क्या क्या बनाते हैं। अब आगे चलते हैं। सरोजिनी नायडू एक नई दुकान पे रुकते हैं और पूछती हैं, फल वाले से पूछती है कि तुम क्या चिल्ला रहे हो। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। फल वाले जवाब देते हैं कि सिट्रन, पोमेग्रेनेट एंड प्लम। सिट्रन यानी नींबू, पोमेग्रेनेट यानी अनार, प्लम कहते हैं बेर को। स्टूडेंट्स, बाज़ार बहुत बड़ा है और यहाँ मैजिशियंस और म्यूजिशियंस भी हैं। स्टूडेंट्स, म्यूजिशियंस यानी संगीतकार। तो सरोजिनी नायडू उन संगीतकार से पूछते हैं कि तुम कौन सा म्यूज़िक बजा रहे हो। तो हम लोग सितार बजा रहे हैं, सारंगी बजा रहे हैं और
और तबला बजा रहे हैं। इसके बाद सरोजिनी नायडू मैजिशियन से पूछ रहे हैं कि तुम क्या जप रहे हो। चैंटिंग मतलब जपना, बार बार किसी चीज़ को दोहराना। स्टूडेंट्स, ऊपर की लाइन में लिखा है म्यूजिशियंस और नीचे की लाइन में लिखा है मैजिशियंस, दोनों में फ़र्क है। मैजिशियंस यानी जादूगर, ये दोनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं, इसलिए अक्सर यहाँ पे सवाल बन जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अब म्यूजिशियंस माने संगीतकार और मैजिशियंस माने जादूगर। स्टूडेंट्स, आप लोग इन दोनों का मीनिंग याद रखना। तो मैजिशियंस बताते हैं कि वो ये मंत्र पढ़ रहे हैं और इस मंत्र का असर बहुत सालों तक रहेगा। अब सरोजनी नायडू फ्लावर गर्ल से पूछती हैं कि तुम क्या व्यू कर रहे हो। व्यू का मतलब है घूमना। ज्यूर कहते हैं ब्लू रंग को। तो सरोजनी नायडू फ्लावर गर्ल से पूछती हैं कि तुम नीले और लाल रंग के धागे से क्या गूंथ रही हो। तो फूलों वाली लड़कियां जवाब देती हैं कि हम लोग दूल्हा और दुल्हन के लिए सेहरा गूंथ रहे हैं और हम लोग फूलों की माला बनाते हैं दूल्हे के बेड को सजाने को। और हम लोग सफ़ेद रंग की फूलों की चादर भी बनाते हैं और ये सफ़ेद रंग की चादर मरे हुए लोगों के लिए बनाते हैं। तो आपने देखा इस बाज़ार में सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर है। ये फ्लावर गर्ल्स नए नए जोड़ों के लिए जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए भी सामान बनाती हैं और जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जो लोग मर चुके हैं, उनके लिए भी फूलों की चादर बनाती हैं। So students, that's it for this video. If you really enjoy and understood the essence of the poetry, express your love by hitting like button and do not forget to leave your valuable comment. Students, go through this summary which will be helpful to you and help your friends by sharing this video so that they can also learn and score good marks easily. If you are new to this channel and not yet subscribed, please subscribe the channel and press the bell icon to get upcoming details. Hope this topic is completely clear. Thank you for watching. Meet you in next session with new poetry if written by Rudyard Kipling from Unit 2. Until then, keep learning. God bless you.